ऑलराइट गाइस, सो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू आयोटा के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। सो आज का टॉपिक भी एक इंट्रोडक्टरी है रियल इमेजिनरी पार्ट को लेकर के ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो पिछली वीडियो में मैंने बात करी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, उसमें हमने आयोटा को लेकर के एक इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को प्लीज असेस कर लीजिए, ठीक है। सो a complex number of the form a plus iota b, where a and b are the real numbers, is defined to be a complex number. So what is the example of a complex number? Let us suppose that z is equals to 2 plus 5 iota, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। 2 प्लस रूट 3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। 4 माइनस 1/11 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। और ऐसे वेरियस एग्जांपल्स आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो एग्जांपल्स है जिसमें आपका ए पर्टिकुलर, ये आपका ए है जिसको रियल पार्ट भी कहते हैं कई बार, और ये आपका बी है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये रियल नंबर्स होने चाहिए बेसिकली, दिस शुड बी रियल नंबर्स इन द सेंस दैट दे शुड बी रैशनल एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी इरेशनल आल्सो, बट दे शुडंट बी ऑफ द फॉर्म आयोटा टाइप, ठीक है। सो ए एंड बी शुड नॉट बी ऑफ द फॉर्म आयोटा टाइप, otherwise they will get a nuisance, right? So 2 or 5 are real numbers, 2 and root 3 are also real numbers, minus 1/11 here is also real number, and 4 is also real number, okay. So these are the examples. Now let us take the next point. For the complex number z is equals to a plus iota b, a is called the real part, I have told you, denoted by the real part z, and rez means real part of z, right? And b is called the imaginary part, denoted by imz. Imz means imaginary part of z again, okay, of the complex number z. For example, z is equals to 2 plus 5 iota. So here the real part of z is 2, right? So of course you're getting that. And the imaginary part of z is 5. I hope you are getting it, ठीक है। So real part आपके यहाँ क्या हो गया, 2 आ गया, और ये iota के साथ जो नंबर लगा होगा बेसिकली imaginary कोफिशिएंट होता है, okay. So that is called imaginary part, right? So here it is 5, okay. Now let us check the next slide. Comparing real and imaginary parts. So two complex numbers z1, it is denoted z1, and z2 are equal if a is equals to c, right? And from here it's b is equals to d, okay. So इधर से आपका a और c यानी कि रियल को रियल से आप कंपेयर कर लीजिए। रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो आपका रियल पार्ट ऑफ z2 की इक्वल होगा, राइट? ओके, एंड 1 मिनट, ठीक है। और आपका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होगा, ओके। सो दिस इज द ट्रिक फॉर कंपेयरिंग द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हिच आर इक्वल। दिस कंडीशन ओनली वैलिड व्हेन z1 is equals to z2, right? So let us see with an example and then we'll close the topic. So there is example, and it is an NCERD example, because I am considering that we should cover basically NCERD first, and then we will try to go over the edge of competition exams, okay. So first of all, 4x plus iota 3x minus y. So this is your first complex number, let it be z1, and this is your second complex, let it be z2, right? So here it is written that z1 is equals to z2, right? सो आप ये कहना चाहते हो कि यार ये इसका रियल पार्ट, ये पर्टिकुलर रियल पार्ट जो है आपका वो किससे मैच करेगा, इसी पर्टिकुलर रियल पार्ट से, ठीक है। सो आप ये कह रहे हो कि 4x की वैल्यू 3 की इक्वल हो जाएगी। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, राइट? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। होपफुली यू आर गेटिंग दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, ओके। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट imaginary part of z1 is equals to imaginary part of z2. सो हमने रियल को रियल से कंपेयर कर दिया, 4x इक्वल टू 3 आया, x इक्वल टू 3/4 आ गया, ठीक है। और सिमिलरली जब इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 3x माइनस वाई को किससे कंपेयर करेंगे आप, यस मैंने गॉट राइट दैट -6, ठीक है। सो अब आपने x की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हो, आप क्या करो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, राइट? सो यहाँ से आपको y सॉल्व करेंगे, और मैं y सॉल्व करके दिखाता हूँ। 9/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू y, सो y मस्ट बी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे, 9 + 24, 24 + 9 व्हाटएवर, 9 + 24 आई मस्ट डू इट हियर, सो 24 + 9, right? So it is 33, right?
So the y that comes to you, I'm writing over here 33 by 4, right? So the value of x is this and the value of y is this. Hopefully you're getting that. So this is the end of this particular topic, that comparing real and imaginary parts of a complex number. So tab tak ke liye okay, bye.